Hello students, now we are going to start with the topic I have told you as your homework. That is, you need to draw the position time graph or the graph between the position x and the time t for various cases which are when the body is at rest, when it is moving with uniform motion, the non-uniform motion, and so on. How to achieve it? First is, if the object is at rest, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या रुका हुआ है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट के रेस्ट पर होने का मतलब है दैट वी डज नॉट ऑब्जर्व और देर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक चीज़ रुकी हुई है उसका मतलब क्या है कि उसकी पोजीशन में, जो भी उसकी पोजीशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर ये कोई चीज़ है, ये एक जगह पे रुकी हुई तो इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, टाइम के साथ ये वहीं रहेगी। That is the case of rest, and hence the position time graph for this case is given by, this is our position axis, this is our time axis, and this is our graph. This is the position time graph if the object is at rest or our object under consideration is at rest. Second case is when the object is moving with the uniform motion. When the object is moving with the uniform motion, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो किस तरीके का शेप को एक्वायर करेगा और विच शेप इज एक्वायर्ड बाय अवर ग्राफ if again we are having the uniform motion. The position time graph for the case of uniform motion is given by this x and t. Third case is for the non-uniform motion. So if the body is moving with a non-uniform motion, the graph is given in this way. The position time graph is given in this way. Why? Let us consider how we can draw this graph. Let us consider a car is moving from rest. एक कार यहाँ से मूव होनी शुरू हुई. A car is moving from rest such that its position increases, its pace, its जो भी उसकी प्लेस है वो बढ़ती है टाइम के साथ. जो उसकी पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है कार का, वो बढ़ रहा है टाइम के साथ. फिर एक ऐसी पोजीशन आई कि कार कांस्टेंट स्पीड से मूव होनी शुरू हो गई. पहला क्या था कि कार शुरू हुई मूव करना, उसने शुरू किया, उसने कुछ स्पीड एक्वायर की, फिर कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया. ये है कांस्टेंट स्पीड पोर्शन. कार ने यहाँ से मूव होना शुरू किया, एक अच्छी स्पीड उसने एक्वायर की, यहाँ पर जाकर उस कार ने एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया. तो इस तरीके से जो मोशन था वो चेंज होता रहा, यूनिफॉर्म नहीं था. पहले यूनिफॉर्म था कहीं ना कहीं, फिर उसने एक अपनी स्पीड ही चेंज कर दी, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना उसने शुरू कर दिया. सो दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ वी हैव two important cases, that what is negative velocity case and what is positive velocity case. पॉजिटिव वेलोसिटी तो क्या है भाई? पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब है टाइम के साथ हमारा जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रही है. एक्स का मतलब है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई और टी का मतलब है कि उस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगा. सो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एज द वैल्यू ऑफ टाइम इंक्रीजेस आवर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. आप देख सकते हो इस पॉइंट पर ये वाली वैल्यूज भी बढ़ रही हैं. जैसे मैंने ये पॉइंट लिया फॉर एग्जांपल, ये वैल्यू भी बढ़ी और ये वैल्यू बढ़ी. इस पॉइंट पर ये वैल्यू बढ़ी, ये भी बढ़ी. तो ये हमारा पॉजिटिव वेलोसिटी रीजन है. ये होती है हमारी पॉजिटिव वेलोसिटी. नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई? कि टाइम के साथ मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रही है. टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है. ये ग्राफ है. जैसे सपोज मेरा ये टाइम था, तो इस टाइम पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सिर्फ इतनी है, जबकि एक ज़ीरो टाइम पर मेरी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी. सो
पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दैट इज नोन एज आवर नेगेटिव वेलोसिटी केस. So we have the two cases, the positive velocity case and the negative velocity case. Now moving ahead to the position time graph of uniform motion. The position time graph of the uniform motion. Uniform motion के लिए हमारा position time graph कैसा होता है और किस तरीके से बनाया जाता है. Position time graph for the case of our uniform motion. Position time graph for the uniform motion. Now, the position time graph for the case of uniform motion is given by this figure. How? Let us consider the theory of this graph. Let us consider the body which has started from this point such that at time t is equal to 0 the value of displacement is given by x naught. At time t is equal to 0 the value of displacement is given by x naught, or at time t is equal to 0, t1 and t2 respectively, we have the displacements as, or the position coordinates as, x0, x1 and x2 respectively. Let us consider the position time graph for the uniform motion such that at time t is equal to 0, at time t1 and at time t2, the position coordinates are x0, x1 and x2 respectively, and we have 2 points C and D on the graph corresponding to time t1 and time t2 respectively. Again I am repeating, we have a time, or we have the displacement, the position coordinates x0, x1 and x2 corresponding to time 0, time t1, or time t is equal to 0, time t is equal to t1 and time t is equal to 0 respectively, and C and D are the 2 points such that they refer to, or they are during time t1 and time t2 respectively. Now, if we draw a dotted line over here such that this point is point E and this angle is alpha. Suppose we draw a dotted line over here such that this is our point E and this angle is our alpha. Now, what is the value of T2 minus T1? What is the value of T2 minus T1? Can anyone suggest me the value of T2 minus T1? The time T2 minus the time T1. The time T2 is equal to OD1 minus the time T1 is equal to OC1. The time T2 is equal to OT1 and the time T1 is equal to OC1. And OD1 minus OC1 is nothing but equal to C1 D1, and this C1 D1 is equal to this CE. So I hope this simple thing is clear to you.
that time t2 minus t1, we have to evaluate the value of t2 minus t1. Since t2 is equal to OT1, since T2 is equal to OD1, T1 is equal to OC1, and the subtraction of these two equations is equal to C1 D1. From this point you can note this thing, and this C1 D1 portion is equal to CE. So T2 minus C1 is ultimately equal to CE. T2 minus T1 is ultimately equal to CE. In similar way, what is the value of x2 minus x1? x2 is equal to OD2 minus x1 is equal to OC2. x2, the distance, x2 is equal to OD2, the distance, x1 is equal to OC2. And OD2 minus OC2 is nothing but equal to C2D2. C2D2, which is again nothing but equal to this ED. This C2D2 is equal to this, again this C2D2 is equal to CE. Thus ultimately we are left with that T2 minus T1 is equal to CE, and x2 minus x1 is equal to this ED, DE. Thus the velocity is nothing, as we know, is the displacement divided by time interval. The velocity is nothing but given as a ratio of displacement and the time interval, that is equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1. That is again equal to ED or DE by CE. Now refer to the graph. Can you obtain the value of ED by CE from this triangle? Can you obtain the value of CD minus DE or ED divided by CE from this triangle? क्या आप इस triangle की reference से इस value को calculate कर सकते हैं? Are you able to calculate the value by taking this triangle or considering this triangle? Yes, the value acquired by this portion V is nothing but equal to tan of alpha. Here alpha is an angle which is shown over here. By this triangle, by using the simple laws or the values of sin theta, cos theta and tan theta, we obtain that tan alpha is nothing but equal to V. Therefore, velocity V is equal to tan of alpha. And alpha is nothing, or tan alpha is nothing but the slope of our graph. Tan alpha is nothing but the slope of our graph. हमारे graph का जो slope है वो tan alpha है. That is a simple thing which is known to you कि graph का slope क्या होता है. जो इस line ऊपर जो lie करता है, that is nothing but equal to the slope. Therefore, we have obtained the value of V, that is equal to tan alpha, and hence we can state that the velocity of an object is equal to the slope of the position time graph. The velocity of an object is equal to the slope of position time graph, and it is a very important fact. So as your homework, you need to consider these important terms. They are very important. From our next lecture, we are going to continue with the next topic of our this unit, kinematics. Study hard, be regular with videos. Thank you.